morning student, I am Kalpana Kiran Tavlare. Next sense organ we will see the ear. In Ayurveda it is called as the Karna Indriya. It is the site of the Akash Mahabhut and its Vishesh अर्थ is शब्द. आयुर्वेद में द्वे कर्ण शिशुकुले दो कर्णपुत्र को यानी कर्णगत आवर्त दो होते हैं और कर्णपुत्र यानी बाह्य कर्ण दो होते हैं, ऐसा चक्रपाणी ने इसका वर्णन किया है. कर्ण और टू अंतर जो है वो 14 अंगुल का सूक्ष्म शरीर में बताया हुआ है. कर्णों में जो संधि पाया जाता है वो शंखावर्त प्रकार का होता है. यहाँ पे 2 पेशियों का अधिष्ठान होता है. कर्ण का अंगुल प्रमाण जो है वो 4 अंगुल प्रमाण चरक संहिता में वर्णित किया है. रोमश कर्ण पुरुष दीर्घायु मीन्स कर्ण संपत्ति के अगर लक्षण देखे जाए तो कर्ण के ऊपर रोम होने चाहिए, वो दीर्घायु पुरुष का लक्षण माना गया है. ये कर्ण जो है मातृजन से उत्पन्न होता है. गर्भावस्था के 3रे महीने में इसकी उत्पत्ति होती है. कर्ण में अगर हम मर्म के अध्ययन करते हैं तो कर्ण में विधुर मर्म का अधिष्ठान होता है, जिसके ऊपर आघात होने से कर्ण बाध्यता निर्माण होती है. और अंत कर्ण में शृंगाटक नाम का मर्म होता है जो मृत्यु प्रदान करता है. अगर शृंगाटक मर्म पे आघात हुआ तो मृत्यु सद्य मरण आता है. एज पर मॉडर्न एनाटॉमी वी विल सी द ear. It is nothing but the organ of hearing and it also maintains the equilibrium of the body. Externally, internally and middle means ear is divided into 3 parts: external ear, middle ear and the internal ear. External ear possesses the auricle and the external acoustic meatus. Middle ear possesses the 3 ear ossicles. 2 joints forms between these 3 ear ossicles. Ligaments attached to the and muscle attachment in the middle ear. And internal ear possesses the cochlea, vestibule and the semicircular canal, that is called as the labyrinth. So the ear is divided into 3 parts: external ear, middle ear and the internal ear. Here is the diagram. We can see that the external ear, that is the auricle and the meatus. Next structure is the tympanic membrane, green color structure. After that the middle ear starts. Malleus, incus and the stapes, these are 3 bones. And most medially there is the structure parts of the internal ear: cochlea, vestibule and the semicircular canal. In this way ear is divided into 3 parts: external ear, middle ear and the internal ear. So we will see the one by one. एक्सटर्नल ईयर की जो पार्ट है ऑरिकल एंड द एकॉस्टिक मेयाटस, वो हम लोग देखेंगे पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑरिकल. कॉमन पीपल दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द ईयर. जो हम सरफेस ऊपर से देख रहे ईयर यानी ऊपर सरफेस से जो देख रहे ये पोर्शन है उसे ऑरिकल कहा जाता है. जो सबसे नीचे का मांसल प्रदेश है दैट इज कॉल्ड एज द लोब्यूल. वी कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑरिकल. Outer margin is called as the helix. Can we see here? Outer margin is called as the helix as shown in the diagram. Outer margin के अंदर जो होता है दूसरा मार्जिन ये वाला, that is called as the antihelix. That is called as the antihelix. Helix, antihelix. Okay. Then the fossa between means this fossa between lies into antihelix and helix is called as the scapoid fossa. ये जो fossa दिख रहा है that is called as the scapoid fossa. Antihelix further divided into the triangular fossa. This is the triangular fossa. This is the triangular fossa. The gap which lies in the auricle is called as the concha. And above the concha there is again the simba concha. छोटा concha, बड़ा concha से 2 concha यहाँ पे होते हैं. एंटीरियर मियाटस का एंटीरियर पोर्शन एक ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रैगस. एंड अपोजिट टू ट्रैगस देयर इज अ एंटी ट्रैगस एंड दिस इज नथिंग बट द इंटरट्रॉगेटिक नॉच विच लाइज इन बिटवीन द ट्रैगस एंड द एंटी ट्रैगस. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ऑरिकल. फर्स्ट वन इज द हेलिक्स. Opposite to helix there is a antihelix. The gap between helix and antihelix is called as the scapoid fossa. Further the antihelix divided into the triangular fossa. Okay. Next the gap which lies in between the auricle is called as the concha. Above this concha there is a simba concha. Tragus and antitragus are nothing but the triangular projection and the intertragatic notch lies in between
these two tragus, and lower portion is called as the lobule, which is covered with the skin. And whole ear auricle is nothing but the single plate of the crumpled cartilage से बना होता है except this lobule. Next we will go for the external acoustic meatus. External auditory meatus भी इसे हम कह सकते हैं. It conducts the sound waves which receive in the concha and transmits to the middle ear. This canal is S shape. लेटर एस शेप जैसा होता है, इसका शेप वैसा ही होता है. नियर अबाउट इट्स मेजर्स अबाउट 24 mm इन लेंथ. 24 mm का जो लेंथ है उसका वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, बोनी पार्ट एंड द कार्टिलेजिनस पार्ट. मेडियल पार्ट जो होता है 16 mm का वो बोनी होता है और आउटर पार्ट जो है उसका कार्टिलेजिनस होता है. नायरेस्ट पोर्शन ऑफ दिस एक्सटर्नल acoustic meatus is called as the isthmus. Next we will see the tympanic membrane. Green structure में जो दिख रहा है that is the tympanic membrane. It is nothing but the thin translucent partition lies between the external ear and the middle ear. External ear और middle ear के बीच का जो partition होता है वो tympanic membrane द्वारा बनता है. It is oval in shape. टोटल शेप इसका ओवल होता है. मेजर्स अबाउट 9 into 10 mm इन द डायमेंशंस. इट हैज़ द 2 सर्फेसेस. इस कान का देखते तो हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के 2 सर्फेसेस होते हैं, इनर सरफेस एंड द आउटर सरफेस. ओके, ये 2 टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इनर सरफेस एंड द आउटर सरफेस. द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी ऑफ द इनर सरफेस इज कॉल्ड एज द अम्बो. नेक्स्ट वी विल सी द मिडल ईयर. Middle ear lies into the temporal bone, cavity of the temporal bone. It communicates the nasopharynx with the eustachian tube. We found here the 3 ear ossicles, malleus, incus and the stapes as shown in the diagram. First one is the malleus, middle one is the incus and last one is the stapes. There are 2 muscles, stapedius muscle and the tensor tympani lies into the middle ear cavity. These 3 bones forms the 2 joints. Incudomalleolar joint means the joint forms between the incus and the malleus, that is the incudomalleolar joint is of the saddle variety, and incudo means joint between incus and stapedius is forms the ball and socket type of joint. We can see the again some specialities of these 3 bones. So there are 3 ear ossicles. We can learn it as a MIS, malleus, incus, stapes. पोजिशन इज लैटरल टू मेडियल मीन्स सबसे लैटरल में ये ईयर ऑसिकल कौन सा होता है, मेलियस, फिर इनकस एंड सबसे अंदर मेडियल साइड में जो होता है दैट इज स्टेप्स. मेलियस इज ऑफ हैमर शेप. वी कैन सी दैट इन डायग्राम इट इज हैमर शेप. इनकस इज अ एनविल शेप और द मोलर टूथ शेप एंड स्टेप्स इज द स्टीयरअप शेप. मीन्स जो घोड़े पे बैठते हुए पैर रखने का जगह होता है दैट इज कॉल्ड एज अ स्टीयरअप, उसके समान स्टेप्स का साइज होता है. अगेन इनका साइज जो है वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है. लेटरल जो बोन है मैलियस इट्स लार्जेस्ट वन, इनकस मीडियम साइज में होता है और स्टेप्स जो है वो स्मॉलेस्ट साइज में होता है. नेक्स्ट वी विल सी द इंटरनल ईयर विच कंसिस्ट ऑफ द बोनी लैब्रिंथ एंड द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ. बोनी एंड द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ. ओके, इस इंटरनल ईयर के स्ट्रक्चर को हम लैब्रिंथ कहते हैं और इसमें बोनी लैब्रिंथ आउटर कवरिंग होता है और उसके अंदर जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं दैट इज कंसिडर एज अ मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ. वी विल सी द दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द कॉक्लिया. बोनी लैब्रिंथ के अंतर्गत जो पहला होता है दैट इज द कॉक्लिया. नेक्स्ट बोनी लैब्रिंथ के अंदर जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज द वेस्टिब्यूल. दैट इज कॉल्ड एज द वेस्टिब्यूल. एंड बोनी लैब्रिंथ के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज द सेमी सर्कुलर कैनल्स. ओके, कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड द सेमी सर्कुलर कैनल्स ये पार्ट होते हैं बोनी लैब्रिंथ में. इसके अंदर हम देखते हैं कि मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ होता है. सो कॉक्लिया कंसिस्ट ऑफ द स्पाइरल डक्ट ऑफ कॉक्लिया, that is membranous part. Vestibule possesses the utricles and the sacules. Vestibule possesses the utricles and the sacule, and semicircular canals possesses the semicircular duct.
semicircular duct. Means cochlea, vestibule and semicircular canals are the part of the bony labyrinth, while as the spiral duct of cochlea, utricles and saccules and the semicircular ducts are the part of the membranous labyrinth. In case of this cochlea, organ of Corti act as a functional part. In case of this vestibule, utricle and saccules, macula act as a functional part which maintains the static balance of the body. And in case of the semicircular canal and semicircular duct membranous part है, वहाँ पे ampulla crest or the crista is considered as a functional part of that semicircular canal. In semicircular canal there is a maintenance of the kinetic balance. In the vestibule there is a maintenance of the static balance, and in the cochlea there is a function of the hearing. The function of hearing is done by the hair cells possesses over this spiral duct of the cochlea. Next we will see the applied anatomy of the ear. Rinne's test done to compare the relative deafness. In this case tuning fork is placed one time in front of the ear and one time on this mastoid portion, mastoid bone के ऊपर रखते हैं, and patient asked to compare the relative जो sound wave जाती है वो कैसे आ रही है. Okay, Weber's test. It is also used to assess the bony conduction and air conduction of the ear. In this case we place the tuning fork over forehead. Tympanic membrane is also known as the eardrum. Examination of ear we can done with the help of taking proper position. For this we have to pull this auricle in upward direction, backward direction, lateral direction. How? Upward, backward and slightly lateral direction. Small piece of lobule is used to demonstrate the leprae bacilla to confirm the diagnosis of the leprosy. Point of maximum convexity of the tympanic membrane is called as the umbo. हमें पता है कि ये जो ईयर ऑसिकल है मैलियस इनकस्टिव्स एट टाइम ऑफ बर्थ ये फुल्ली ऑसिफाई हुए रहते हैं, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो एंडोडम, मेजोडम, एक्टोडम तीनों जो ओरिजिन होते डम लेयर वो कॉम्प्राइज करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ द ईयर. थैंक यू वेरी मच.